So let's start from the beginning itself. कहाँ पे आप पैदा हुए थे वहीं से start करते हैं एकदम. मैं घाटकोपर में पैदा हुई थी और I've lived there for 24 years. We just moved out. Now I live wherever I live. And I've really enjoyed my childhood. Yeah, it's been from... And whatever we had at that time also, I think my parents made sure that we're really happy, no matter what. Did it 0 to 5 का पहले बताओ. 0 to 5 में आपको क्या याद है age? 0 to 5. 0 to 5. कुछ भी याद है? दादी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है. Dad mom कैसे थे तब? My dad and mom, they've had a very... They started from ground, bro. Like literally ground. I mean, they had nothing. My dad had nothing. And now where he is, I feel like it's like a miracle. I mean, what do you say? The black horse of the family, you know? So I dark think horse. he's just that. Dark horse of the family. And it's just insane. So I've seen him grow. Like he had a motorbike that everybody in the family used to use. And then he upgraded to Maruti 800. Oh, fuck. True, same. Insane. And then he got a Zen. After that, he got a S-Team. Then Honda City उन्होंने ली थी ऐसा सेकंड हैंड ब्लू कलर की. किसी ने मॉडिफाई करी थी और बहुत अच्छी लगती थी तब. लाइक इट वाज इनसेन. इट वाज अ कूल कार. उसके ऐसे उठते थे. रेज था होंडा सिटी का तो एक टाइम पे. हाँ, रेज था. तो उसके ऐसे उठते, जो डोर होता है नॉर्मली नहीं खुलता था, ऊपर जाता था. तो वी वुड गेट रियली एक्साइटेड. एंड सो ही हैड दैट फॉर अ व्हाइल. देन ही गॉट Skoda, देन Captiva, then I think he got his first... After that, actually, I don't remember. But this I remember. He got Mercedes, and then he got... now he has a Maserati. Wow. So it's like... That's insane. So from 800 to a Maserati. Yeah. I like it. Mom has been a housewife. I was the only child in the house out of all the cousins that my mother used to wake up. She's like, Dadra, upar chad karo. You know, go for your... Proper workout. Proper workout she would make me do. Also because at that time I had started to get PCOD and I had started to gain a lot of weight. It does that to you. Yeah. And your skin starts to break out and you start looking a different way. So I think it's a lifestyle change had to happen for it to sort of not aggravate, but it still did regardless. We tried to curb it as much as we could. Difficult but for 10 years, 10, 13 years, I sort of battled with it. And then, of course, your hormones calm down. So anyway, that's a different story. Do you think your mom had a vision for you? I think she did. Yeah? She did. When did you realize that? She told me already. She actually, at one point, she said that I'm going to teach you everything and then you pick something. Don't sit at home. Because I did and I don't want you to do the same. जब कुछ नहीं होता है ना लाइफ में और जब you see your parents struggle so much, it's just that I think वो अपने अंदर भी आ जाता है कि यार वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ. एंड मेरे दिमाग में ऑलवेज ये होता था कि I always wanted to add another zero to my dad's wealth, whatever he makes. क्यों? Because I've seen him work so hard, and I wanted to be like him. After 12. But what was the incident or the trigger? मेरे लिए यार मैं अपने पापा को रोज़ मैं इतना मेहनत करते देखती थी ना. वो कुछ दिन घर पे मतलब आई थिंक 2-3 घंटे के लिए आते थे खाली. और जब मैं बड़ी हो रही थी ऐसा कोई हाउ डू आई एक्सप्लेन, पेरेंट्स का भी था एंड मोस्टली मैं जब बड़ी हो रही थी ना तो आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक द अदर गर्ल्स look when they're a certain age. I looked quite older and I had gained a lot of weight and it's just that फिर वो हो जाता ना यार कि how do I get my life back on track? How do I make people really understand me and really feel like, oh, you know what, she's the real deal. How did the 5 to 10 Dhwani evolve to the 10 to 15 Dhwani आपके हिसाब से? She was almost similar, yeah. Similar? Yeah. No change. No change. And 10 to 15, now we're getting into 15 wala. So 10 to 15 or 15. 10 to 15, I feel. At 12, actually, I'll tell you, I got this. I still remember that one time that I went for a run.
because I was really frustrated of people really calling me fat. And I'd started to get this, I went on this diet and I used to go for a run every day to lose weight. और वो मतलब आपको हर कोई बताएगा जो भी इस चीज़ से डील किया उन्होंने लाइफ में, they'll tell you भागो, हाँ भागो और कोई वो नहीं है, भागो. So at that time ना यार मैं यही सोचती थी कि I remember that day when I went for that run on that particular day that I'm going to do something, I'm going to make it. I don't know what, but from there I think my life really changed. Then I started to participate in every single thing that I could. The trigger was external people जो आपको बोलते थे कि आप fat हो. Yeah, and that's not wrong, bro, because I feel like that society, अभी उनको मैं change नहीं कर सकती, and they contributed to the good, so it's not a sob story. I feel like it's something. Yeah, you don't look like sad. Yeah, and they made me strong, man. And thank you. Haters gonna hate. Yeah. Nice. फिर 15 के बाद क्या हुआ? यार तुम अपने बारे में कुछ बताओ, मैं बोलती ही जा रही हूँ. नहीं बताओ, मजा आ रहा है. ये थेरेपी सेशन हो गया है bro. नहीं. उल्टी कर रही हूँ मैं सिर्फ. I did my first playback with Rahat Fateh Ali Khan sahab for Ishtihar. It was Diljit Dosanjh and Sonakshi Sinha. So their film, but उधर से कुछ हुआ नहीं. Still the exposure. Yeah, काफी बड़ा exposure था. और एक वर्जन भी गाया था जो YouTube पे डाला था, and I think that time I first met Diljit and he was just like insanely sweet. Like I really liked how very good. Yeah, he started like at that time Twitter pe I had put it and I remember him liking it, that thing, and then him sending me like a not a message, but at that time he would just make sure that I'm appreciated. And then of course he unfollowed everybody. So yeah. Oops. But today also I feel like if I sort of he added me on this one Instagram live, and I think he's always been very sweet and very appreciative. So I was shooting for this film Kahan Shuru Kahan Khatam in Bhopal. And I just, because I really like him, yeah. I mean, who doesn't? So I went on one of his lives and then I didn't say anything. It's very recent है. हाँ, मतलब 1 साल हो गया. हम शूटिंग कर रहे थे तब 23. तो मैं गई, मैंने सिर्फ एक हाथ डाला था और इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव पे, क्या ही उनको देखेगा. So उन्होंने देख लिया and he's added me. I said what? मैं से नाइट ड्रेस में बैठी हूँ मेरे इसमें. So I couldn't be like I'll ignore it or whatever. So I added myself, and then he was making a smoothie. So he said, first thing he said, "Papa kaise hain?" I said, "बहुत अच्छे हैं." Because my dad, of course, he worked in T-Series for the longest time, and anyway, that's a different story. I shall come to it. But he asked me, "Papa kaise hain?" I said, "Very, very good, बहुत अच्छे हैं." Sir, मुझे आपकी स्मूदी चाहिए, बहुत पर्पल लग रही है. मैं क्या बोल रही है, चुप हो जा. And then he said, हम आपके गाने सुनते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं. We really. So I said, what? I couldn't believe it, and I was just, I was just totally in awe for like those 5-7 minutes that I was on it. And जाते also I said, please, ये smoothie आप मुझे भेज देना. And then again I was like, Dhwani, shut up. But what do you do? What did he say? What? What did he reply to that? He's like, ignored. चल निकल अब तो. Get out. No, but I thoroughly enjoyed myself, bro. Yeah. But I got embarrassed, but I was like, it's a cute moment. Whatever. ठीक है, back to 1821. Yeah. गाने वाने. Then I did Dilbar. That was the first big breakish of sorts. Yeah, but a lot of people thought that it was only sung by Neha. Then people started to know eventually that I've sung a little bit of it. The starting bit is my voice. Yeah. How did that happen? Like, what did it take from you to get there? वो वाला process. I had gotten in touch with Tanishq Bagchi at that time, and I did. He called me actually to sort of do this as a scratch, sort of, you know. So I did it, and first he said, "तुमने दिलबर सुना है?" I said, "नहीं," because
पहले आया था. So he said, मैंने भी सुन के आना. So I said, okay. So then I went and heard it and I came back to him and then he said, हाँ ये गा दे type. And he was very gracious about it, bro. Like I just feel to have that opportunity also was I think it was fantastic for me because he's so good. And that happened. Then there was a gap after Dilbar. People started to know me a little bit. Then I'd like to think so because my Instagram followers started increasing. कितने थे तब? 13,000 से 16,000 हो गए थे. 3,000 बढ़ गए थे. तो I was like, oh sick, next level. So anyway, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ. बहुत बड़ा नंबर है. 2018 में 13 से 16 मतलब इन्फ्लुएंसर. लाइक हाँ कुछ तो हो ही जाएगा. और उसके बीच ना इशारे तेरे कर रहे थे गुरु रंधावा और टी सीरीज. तो वहाँ पे somehow I was in the studio with Abhijit Wagani and I went there. तो मैं काफ़ी मेरे को जिम करना पड़ता था तो मैं ऐसे स्वेटी कपड़ों में चली गई थी. And there enters Guru Randhawa and again I made a fool out of myself. So there I am and then we're doing this and I was so young at that time, bro. Like I had no idea only what is happening around me. What worked for you? What worked for me? Like जो भी सिंगर सुन रहे हैं इसको या जो भी in general fundamental आपके हिसाब से क्या चला जो आपने किया which people can replicate and try to do that, acting, music, whatever. How do I explain it in words? I feel like कुछ ऐसा होना चाहिए आप में जो X factor जो लोगों से अलग हो. और वो जल्दी पता नहीं चलता. You just have to constantly be at your craft for you to, because something you'll bring to the screen that you also can't point out is what I feel, and something you'll bring to तो voice में एक चीज़ होती है that at least don't sound like someone else. And yeah, that I mean that identity I feel like is very important to have if I had to put it in words. And for me what worked was I think I sort of had this voice which had a western element and it's kind of sexy and it's also sweet at the same time. Yeah, it is sweet. So it is because it's quite different in Dilbar and Vaaste. Vaaste is one of the I love it. Yeah. I was just telling them also before you came that Vaaste बजा रहा था एक दो बार. कॉलेज में बहुत सुनते थे हम. But sorry to interrupt. Go on. Yeah. So वही तो I was also in college when it got made. क्या बात करें, कॉलेज में सुनते थे हम. True. एक ही साल बड़ी हूँ मैं तुमसे, शर्म करो. कॉलेज में बहुत सुनते थे हम. So वो हुआ यार. फिर इशारे तेरे के बाद डांस करने जाती थी, गाना सीखने जाती थी. पूरा दिन वैसे निकल जाता था और कॉलेज भी जाती थी. तो सुबह 6 बजे उठ के ये सारा करती थी. एंड मेरे दिमाग में ना तब ये आइडिया आ गया था कि यार मुझे एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है. We did Leja which released in 2018. Little did I know, it blew up everywhere. Then we did right after that we did so usi dauran we shot one more music video. It's called Main Teri Hoon. That's also about like 100 million views on YouTube, which was insane. And after Leja they sort of signed me. Then I went to T series after Leja. Afterward we also did Vaaste with them. Vaaste was 2019. The catch with early success is also that you then have no time to make mistakes. Because then if you make mistakes, people just write you off. One puni wonder बोलने लग जाता है. Yeah. So I really tried my level best. Then afterward, thankfully, Saiyaan also happened, which was in Saho. So I sang it in like 4 languages. And one of them was with Anirudh also. So that happened. And उसके बाद काफ़ी गाने किए और फिर तो चल ही रहा है. वास्ते में क्या हुआ था? वास्ते की जर्नी कैसी थी? वास्ते के टाइम में एक्चुअली बहुत जब गाया था तो बहुत बीमार पड़ गई थी. So वो जो then Tanishq is like, I love this voice. So I was like, this is like Phoebe from Friends. I was like, smelly cat, sexy वाला. I was like, listen. So he's like, this is I was watching that episode yesterday. Yeah, see? That is insane. So that happened.
फिर तब एक्चुअली आई वाज शूटिंग फॉर लेजा रे व्हेन आई डब्ड वास्ते. अच्छा. So then we decided, oh, this is sick. So we released that. And Papa was very actually instrumental in deciding what is right. What are the top 3 traits जो आप बताना चाहोगे अपने बारे में which kept you going? Because I'm sure ये sound अच्छा कर रहा है, but back of the head में when you get a lot of success, a lot of attention, there's a lot in your head which is going wrong parallelly. You're overthinking, you're thinking ये आवाज़ है कल चला जाएगा वगैरह वगैरह, and वो आपको ऑलमोस्ट फोर्स कर देता है स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए कि मुझे इतनी तेज़ जाना ही नहीं है. तो दिमाग में क्या चल रहा था, वो 3 चीज़ें क्या होंगी विच यू थिंक kept you pushing and kept you at bay? I do overthink a lot, yeah. That's for sure. But I feel like I always move on to the next. That's something that a trait that I have. मैं भूल जाऊंगी जो हुआ, आगे बढ़ती रहूँगी एंड अपना करती रहूँगी. पर ना आई थिंक बीच में क्या हो गया था कि आई जस्ट डिडंट फील लाइक इट. या आई जस्ट देन टुक सम टाइम टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग विद मी. सो आई थिंक इट वाज अ ईयर एंड अ हाफ. कौन सा टाइम है ये? 2022 पोस्ट कोविड. हाँ, क्या हो रहा था? गाने वैसे कर रही थी, पर मेरा ऐसा मन नहीं हो रहा था कि यार मैं जाऊँ किसी से बातें करूँ, या ब्लैंकनेस, एम्प्टीनेस क्या काफी था? एम्प्टीनेस, काफी ब्लैंकनेस, काफी ऐसा लग रहा था कि क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वैसा. हाँ, लाइक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील लाइक माई हेड हैड बिकम वेरी नेगेटिव. सो आई वाजंट फाइंडिंग जॉय इन एनीथिंग at that point. So I don't know if you call it depression, but it just hit me and it went. But I was in this phase for quite some time, for a year. I still was working, but then again, as like I said, very blah, not really. फोन no उठाने का मन sense नहीं of कर रहा है, direction, लोगों से like लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है. तो वो हुआ. पर उसके बाद आई फील आई बाउंस बैक वेरी फास्ट लाइक दैट. बट आई फील लाइक ये होता है यार, आर्टिस्ट के साथ होता है. फील कभी कभी सेंस ऑफ डायरेक्शन. हाउ डिड यू एंटर दिस स्पेस? मतलब नेगेटिव. आई हैव नो आइडिया ब्रो. इट जस्ट automatically happened. Then I started to work again. 2023 I decided I want to do a film because I wanted to add another feather to my cap, and I wanted to upskill myself like I always have wanted to. Yeah, I'm and just to contribute to the idea of just being a complete artist and a pop artist, which I think I did, and it released, and then the first day we sold about 1 lakh tickets. I saw that video with your dad. Yeah, that was nice. It was great for us. Yeah, we did Friday was like a crore plus. We will come to the movie. Yeah. But मेरे को और थोड़े ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना चाहिए, पीपल कैन लर्न. तो फ्रॉम अ लर्निंग एंगल थोड़े सवाल पूछूंगा मैं. एक चीज़ मैंने अपनी में देखी है कि नैक ऑफ लर्निंग थिंग्स ये आप में काफ़ी ज़्यादा दिख रही मुझे. लाइक स्कूल में यू यूज्ड टू डू एक्टिंग एंड डांसिंग एंड दिस एंड दैट, एंड देन भी एक्टिंग वर्कशॉप की बात करी. अब एक्टिंग में घुसना है फ्रॉम सिंगिंग, बिकॉज अब सिंगिंग कर लिया XYZ. नहीं करा नहीं है यार. एक लेवल तक किया, ये भी करना है. बट पैरेलली करना है, क्योंकि अभी आई जस्ट सॉरी आई एम कटिंग यू ऑन दिस, बट इट्स जस्ट दैट आई वांट ये जब मैं बोल रही हूँ ना दैट आई वांट टू डू एक्टिंग नाउ, मेरे को पैरेलली करना है. तो अभी मैंने एक पिक्चर करी, अब मैं फिर से जाऊँगी म्यूजिक करूँगी, सिंगल रिलीज करूँगी, क्योंकि यार वैसे तो लोग उसी के बेसिस पे लोग मुझे जानते हैं, और मेरा कोई मन नहीं है कि मैं म्यूज़िक छोड़ूँ. मैं नहीं छोड़ूंगी कभी भी नहीं. एंड आई फील लाइक म्यूजिशियंस एनी वे हैव अ लॉन्गर लाइफ करियर स्पैन दैन एक्टर्स. सो एंड दिस इज जस्ट अनदर, it's a part of my package. Music is the main crux of it, dude. तो again coming back to the OG question, एक trait जो मुझे दिख रही है common is that no matter what's happening, बुरा अच्छा, you keep moving. 100%. आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. That's one of the key successes का reason आपका. और दो बताओ. आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव आउटलुक रखो लाइफ में, होप नहीं छोड़ना. I don't, so even if I'm getting into a space where I'm just like, okay, fuck, sorry, I can't. You can't? I swear? Oh. लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल के जा चुके. Okay, कि मैं यार ये नहीं कर पाऊंगी. तो वो ना already you're setting yourself up for failure.
So I don't. Limiting I belief. make sure that I don't do that. I'm very delulu like that in my head. Like In a positive way. in a positive अच्छी way. बात है. Like I make sure that I've dreamt it, seen it, and laughed about it, cried about it. Like I have this thing where I've never said it before. Oh my god! Cover it. So I drive in the car, and I put on music, and it's mostly the unreleased one, and I cry, and I see things and I cry, like in a good way. And I really feel, and I read it in a book, that when you add emotions to your thoughts, they really manifest themselves. I'm not crazy, guys. But a lot of people do a lot of things, okay? नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ है. Like I was doing an expedition recently. अभी मैं एक हफ्ता जॉर्डन में गया हुआ था, तो लगा बिजनेस वर्कशॉप टाइप थिंग वेर हम 30 लोग को बैठा दिया था, और ऐसे अननोन एक्सपेडिशन कहते हैं इसको, ठीक है. तो हमें लेके गए थे, मैं पता नहीं था जॉर्डन गए हैं, और पहले तो जॉर्डन लेके गए तो मैंने बहुत फटी, क्योंकि मिडल ईस्ट में है, सामने इजराइल है, पीछे ईरान है. Correct. तो पहले एक दिन तो डर लगा, बट फिर देवर लाइक इट्स अ सेफ कंट्री वगैरह वगैरह. वहाँ पे हमसे ये सब करवाया गया है. उन्होंने हमसे लिखवाया अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिखो. लिमिटिंग बिलीव्स मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना बचपन में ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना चाहिए, या फ्राइडे को मतलब बिल्ली सामने से कट के चले जाएगी, ऑल दैट स्टफ, नाखून रात को नहीं काटने चाहिए. वैसे ही आप अपने आप को लिमिटिंग बिलीव्स बोलते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे ये नहीं सकता, मुझसे वो नहीं सकता. तो उसने हमसे वो लिखवाए 10, 15, 20, ऐसा मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे. क्यों? क्योंकि वो क्यों तुमने मुझसे तो पूछ लिया है? अरे नहीं, मेरे पास अननोन एक्सपेडिशन है तो वो गुस्सा करेंगे, बट लिमिट बताता हूँ कि उन्होंने ऐसे बिलीव्स हमसे लिखवाया. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. बिलीफ लिखवाने के बाद उन्होंने बोला इसको चेंज करो. जैसे यू आर ऑलरेडी एट दिस पार्ट कि आई एम नॉट गुड इनफ, यू राइट यू आर गुड इनफ, एंड देन यू स्टार्ट अ पॉजिटिव लूप ऑफ दैट. Correct. And then when you feel it, which is the emotion aspect of it, you start behaving like that. Similarly with you also, जब आप गाना सुन रहे हो और इमेजिन कर रहे हो विजन, लाइक यू आर बिलीविंग कि ये होगा वो होगा, एंड यू आर अटैचिंग हैप्पी इमोशन और व्हाटएवर इमोशन. क्राइंग तो एवरी इमोशन का एक्सट्रीम इज क्राइंग. आप बहुत खुश हो तो आप रो रहे हो, आप बहुत दुखी हो तो आप रो रहे हो, तो उसमें तो मतलब So you have to go to the extreme in your head, and वो Yeah. ऐसे gradually शुरू होता है. ऐसा नहीं है कि मैं बस गाना चला के रोने लगती हूँ. yeah. I constantly keep thinking about it, and I make scenarios, and like for example, so let me say it only while I'm this open. Yeah. So I am here. I've come for an award show. My dad is here. He's sitting right in the this, and I've gone up and I have an Oscar in my hand, and I've seen my outfit. I've seen what I exactly look like, and I've seen what my dad is wearing. It's just an example. नहीं अच्छा है. It's just something that. Yeah. So यही तो प्रॉब्लम है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे बनने के लिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक तो क्यों नहीं करो यार भाई, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग. जस्ट इमेजिन. और ऐसे सोच सोच के ही पहुँचे हैं. आई फील लाइक इफ यू डोंट थिंक यू कैन नॉट डू. एंड माई डैड इज इन द फैमिली एग्जाम्पल ऑफ इट. अब जहाँ हम रह रहे हैं और जो हमारी लाइफ है भाई, वो तो सोच भी नहीं सकते. वो जब बड़े हो रहे थे, आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी दैट आई हैव स्टेड एंड स्लेप्ट इन अ रूम जो कि मतलब ऐसे तुम और मैं बैठे हैं ना, ये जो ऐसा है इतना सा था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो. एक छोटा सा वहाँ पे टेबल फैन लगा देंगे, एक जीरो लाइट लगा देंगे, यू नो द बल्ब, और दैट्स इट. एंड चूहे हैं. ही स्लेप्ट लाइक दैट. they've seen that time. So imagine from there to today, he's like, if I, वो मेरी सोच से ही हुआ है. मैं करते चला गया करते चला गया करते चला गया. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम करते रहो, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, लोग तुमको देख लेंगे एंड दे विल चूज यू. मैनिफेस्ट करते रहो, विजन करते रहो, और काम करते रहो. ऐसे सोच के कुछ नहीं होता है. ऐसे सोच के तो कुछ भी नहीं होता है. लोग नोट बना रहे, सोचूंगा मैं. विराट कोहली को तो जानते हो, विराट कोहली बहुत बोलता है इस बारे में. यू नो ही यूज्ड टू से दैट, उसका अगर आपको पता है, इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे थे 2014 में, वो बेचारा 0-0, 10-5 ऐसे बहुत आउट हुआ था. एंड आफ्टर द नेक्स्ट 4 years बहुत सक्सेस मिला विराट को, ऑफकोर्स 2015, 16, 17, 18 में ही कम्स बैक टू इंग्लैंड. एंड सब उसकी बैंड में जा रहे हैं कि भाई तूने पूरी दुनिया को कर लिया, बट इंग्लैंड के पिचेस में तो नहीं खेल सकता. एंड ही सेड दैट्स वेयर इट वेंट फेमस फ्रॉम द विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स. इंडिया में स्पेशली, यूएस में तो कोबी ब्रायंट ये सब काफ़ी बात करते थे कि मैंने जेम्स एंडरसन को आधे घंटे उसको कवर ड्राइव मारते हुए देखा है. एंड देन ही हिट मल्टीपल सेंचुरीज इन दैट सीरीज, एंड वो भी मिथ ब्रेक कर दिया उसने. सो सेकंड सीक्रेट हमें पता लग गया है धोनी का. नाउ थर्ड, गिव अस अ थर्ड वन. फर्स्ट इज कीप मूविंग, सेकंड इज मैनिफेस्ट एंड गो इंटेंसली डीप विद दैट. तो एक्टिंग में भी हेल्प हुई होगी फिर तो, बिकॉज एक्टिंग में भी यूज़ करती है ना, वर्कशॉप इनसाइड आउट इनसाइड इन. और थर्ड प्रैक्टिस, लाइक इन जनरल. practice of like your craft.
every day. Get up and do it. You still do riyaz every day? Yeah, you will get good eventually. I feel like my voice has changed over the span of 5 to 6 years that I've been here, and practice is the only one that's helped me. Like, I've gone back to it. Sometimes ho jata hai. We're all human, but I make sure that वो नहीं छूटे. जिस दिन वो छूट गया ना, और जिस दिन आपको ये लगने लगा कि यार मैं बस किंग हो गई हूँ, वो नहीं हो पाएगा. वो आगे आप फिर बढ़ ही नहीं पाओगे और कंप्लेसेंट हो जाओगे, स्टैग्नेट हो जाओगे और करियर खत्म हो जाएगा. Don't take anything for granted. Nothing at all. Because it goes by so fast. हाथ से चीजें इतनी जल्दी निकल जाएंगी तुमको पता भी नहीं चलेगा. Got it. ठीक है, मूवी के बारे में बात करते हैं. You're commitment phobic in the movie, correct? Yeah. Of sorts. I'm not commitment phobic, yeah. I'm just the Meera is not. It's not a commitment phobic girl that tries to run away from home. She's क्या लिख दिया है ये, किसने लिखा है? नहीं, तो ये नहीं है. करेक्ट कर दो उनको भी. हाँ, मैं करेक्ट करती हूँ. ये वो नहीं है. It's about you know, sometimes we think in a society it's okay to not ask a woman what she really wants in life. All the it's time. About that. Exactly. So that's exactly what I'm saying, and that's what she's about. She's like, bro, I want to live my life freely, and मेरे को अगर शादी करना है तो मैं करूंगी, और जिससे करना है उससे करूंगी ना. आप मेरे को पूछो तो सही, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? कैरेक्टर में आ गया. हाँ, तो भाग गई वो. It's just that. इंटरेस्टिंग. बट रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे बात करनी थी इसी टॉपिक को लेके. बिकॉज यूर जेन जी ऑल्सो 1998 या एक साल 97 एंड पोस्ट. व्हाट इज योर व्यू इन द थिंग्स दैट यू सी इन situationships and relationships and commitment phobia, not in the movie but in general, and how do you draw a parallel to the movie from that? सोचा इसके बारे में कभी? I'm not commitment phobic at all. I in fact believe in having one partner that you sort of live the rest of your life with, because I've seen my parents do it, and they have periodically been very accepting of each other and made sure. So there's something very beautiful about it. It's a friendship. At the end of the day, I feel like love really disappears, and what is left of it is friendship. Pyar dosti hai. It's true. And I've seen that in my parents, and today also they like each other, dude, and that's very important with who you are. And agar hum constantly move karte rahenge from one person to another, I don't think that really happens. You don't find that deep sense of attachment which you'd only have with your parents then. And when they're gone, who else do you have it with? There has to be one person in the world, at least. So why do you think ऐसा हो रहा है? Like in our generation, हमें तो बदनाम कर रखा है ऐसे लोगों ने इसको लेके कि we are not serious about commitment and all this. Not just in relationship but work. हर जगह हमें बहुत, you know, in like, I'm sure you heard about it, that Gen Z are one of the most difficult people to work with because they're like, they leave the job, अरे नहीं करना मुझे. That attitude of letting go very easily or not attaching easily. It's in a way it's a good thing also, bro, because I feel like there's so much pressure, and I feel like unnecessary pressure नहीं लेना चाहते हम क्यों लें? For example, अगर मैं खुश नहीं हूँ कोई situation में तो मैं नहीं रहूँगी ना. And as a generation, if they're accepting that, I think it's a great thing. But at one point, I don't agree is that at least कोशिश तो करनी चाहिए. टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मत रहो, बट थोड़ा सा अपने आप को संभाल के इन अ रिलेशनशिप. आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट लिटिल बिट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सबके साथ झगड़ा नहीं कर सकते ना. मेरा भी आई कम फ्रॉम द सेम दिस दैट इफ आई एम नॉट हैप्पी इन अ थिंग आई हैव अ spat and but when like you out. like वही thin line वही है ना कि fair enough if you're not enjoying something leave it, but where do you draw a line जहाँ पे उसको फ़ायदा नहीं उठाने लग गए कि थोड़ा सा भी कुछ होता है अरे यार नहीं करना. वो जो चॉइसेस वाला जो प्रॉब्लम है इन अगेन पैरेलल बिटवीन रिलेशनशिप्स एंड वर्क, कि आज यहाँ जॉब छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा, कुछ नहीं होता, आई एम नॉट डाइंग, आई हैव माई यू नो लाइक हाँ बेसिक चीज़ें हो रखी हैं. सिमिलरली इन रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है तू मत कर, कोई और. चॉइसेस आर अ लॉट इन बोथ द एस्पेक्ट्स. वो थोड़ा गलत हो जाता है यार. गलत हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ खुद के लिए ही ना. सेंटर क्या है? व्हाट डू यू मीन सेंटर क्या है? सेंटर नहीं बचता ना फिर कोई. एक तुम्हारी जगह कहाँ है फिर? Where will you go in? Because at the end of the day, it's a society. It's आप उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं 4-5 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे जितना आप कर पाओगे ना. तो आप हर जगह से अगर अपने आप को निकालना चाहते हो
तो वो सही नहीं बैठता. फिर यू डोंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, you just don't know what you are and who you are. I feel like that is something that and correct me if you think it's not right what I'm saying, but I genuinely feel like if I keep moving on from one person to another, my energy will get displaced because I'm interacting with, for example, I'm dating you. We dated for 6 months. Then I realized, oh no, one wrong thing you said. Ick. Bye. So then I'll go move on to the other person. He also said something. Then I'll move on to the other. My energy keeps shifting. It keeps changing. And that's not good. फिर मैं अपना actually जो life में focus करना है वो कैसे करूँगी? कुछ तो sort होना चाहिए ना. कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि यार ये है ना, ये मेरी life में रहेगा. मेरे माँ बाप रहेंगे, ये मेरे लाइफ में रहेगा. अब मैं लड़ती हूँ दुनिया से. हाँ, अब मैं अपनी लाइफ उठाती हूँ यहाँ से. अब मैं जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी. मैं इस पे भी फोकस करूँगी क्योंकि मेरे को इन लोगों से प्यार है. पर अगर मैं इनको थोड़ा सा कम वक्त दूंगी ना तो दिल बी ओके विद इट. दैट्स माई सेंटर इज व्हाट आई मीन. एंड आई फील लाइक एज अ जनरेशन दैट वी समहाउ लैक. I think very well explained. I agree with you 100%, and I think I also come from similar thought and similar belief कि वो center से, that's why center का मतलब क्या है. It's a good word to have. Base मैं उसको base बोलता था कि आपकी ये जब sorted है, you are not scared in life to fail. Absolutely in a way. not. Because even if you fail, you have this back in a way to go back to, and that's the real strength of relationship, be it parental relationship, your sister, mother, father, whatever. So that is something which Gen Z में थोड़ा सा इशू है. आई एग्री विद दैट. बट मेरी बहन में नहीं है यार. दैट्स बिकॉज ऑफ योर वो ना अपब्रिंगिंग. थोड़ा सा है पर इतना नहीं है. शी विल मेक श्योर शी इज जस्ट इमोशनली लाइक वेरी टाइट विद अस. एंड तभी नहीं है ना. उसकी दोस्त भी अभी तक सेम ही है यार. तो मैं आपको बताता हूँ पैटर्न क्या होता है ना स्कूल के. सो फॉर एग्जांपल वंस यू स्टार्ट लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली, शायद तब होता होगा, तब वो आता है. एंड अगर आपकी रिलेशनशिप विद मॉम डैड इज नॉट गुड तब भी होता है. ये दो मोस्ट कॉमन है. लाइक पीपल मूव फ्रॉम इंदौर, भोपाल टू बॉम्बे टू दिल्ली फॉर कॉलेज वगैरह वगैरह. एंड इफ दे आर नॉट टाइट विद देयर पेरेंट्स देन इट्स वेरी इजी फॉर दैट टू ब्रेक. एंड वंस दैट ब्रेक्स यू टेक दैट रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. एंड वंस यू टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड देन यू आर लाइक चॉइसेस, ऑप्शंस, एंड इन दैट ऑल्सो लाइक मेरा तो कोई नहीं है. एंड दैट वाइब कम्स विद द जेन ज़ी पीपल अ लॉट व्हेन यू शिफ्ट और यू आर नॉट क्लोज. When you are close, I've seen this pattern also. You're so close to your family, so you understand the value that it provides you. वो जिसका है ही नहीं उसको पता ही नहीं ना, वो वाली प्रॉब्लम हो जाता है विद आवर जनरेशन. एंड बिफोर आवर जनरेशन लाइक हमारे मॉम डैड्स एंड ऑल दैट, उनका तो इसमें टाइम ही नहीं था दिमाग लगाने का. वो अपने खाने का सोच रहे हैं. एग्जैक्टली. ये सब का कहाँ सोचेंगे. सो और यार सोर्स हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक वी आर टॉकिंग, आई थिंक इसका एक ही आंसर है. just be attached with people that raised you. But again, then there are a lot of people that are really not good parents. Of course. Yeah. So I don't speak for them, but I cannot speak for them because touch wood, I've been in a different place of life and I've really had amazing parents that raised me well and are constantly there for me. But that has to be again very strong for people to not be how they are. I don't think it's a Gen Z thing or a millennial thing. It's a very मेरा अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो true my bad नहीं होता यार. True वो बहुत डिफिकल्ट, लाइफ मनूवर करना डिफिकल्ट होता है. What is next for you? Next for me is I'm doing shows now and going to release singles. What do you look forward to? Yeah, just everyday music. Yeah, that's what I look forward to. तो ऐसे कुछ गोल नहीं है कि मतलब आज ये करना है, कल ये करना है, एक साल के अंदर ऐसे करना चाहिए, कोई टाइमलाइन, कुछ गोल है? Where do you get your anxiety from? Anxiety? From in terms of goals कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, guilt वाला. रोज का भाई रोज का फोन घुमाओ, बोला ये नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमारा इंट्रो रेडी नहीं हुआ. किसका? मेरे शो का. हाँ. तो 36 फोन लगाए वेट कर रहे हैं कब आएगा, कब देखेंगे, अप्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार. एंड एक आर्टिस्ट के लिए ना जान जलती है अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ जो मुझे प्रोवाइड करना है. तो अगर मुझे वो लाइट नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए तो मेरी जान जलती है.
So people who have a vision in terms of what they want to show to the public, और मुझे ऐसे locally ऐसे जाके vanilla show करके नहीं आना है. I want them to sort of have the best come time there and have a good time, yeah. But the problem comes where you don't get the kind of inventory you want. And it happens to a lot of Indian artists. Like, you make anyone sit here, they'll tell you. To end this, what would be your giveaway to the audience? I just thought I'd know Ayush Shukla more, but I don't think I did, because he asked me a lot of questions. I didn't have a lot of time to talk about myself. But that I'm sad about. But otherwise, I feel it was a great chat and mostly ulti. Yeah, and at one point, if I've gotten angry or like frustrated about a certain thing, forgive me. I didn't see that. I'll look for it now. But thank you. No, I'm kidding. It was a lot of fun, and I hope to come back and chat with you soon, and maybe that'll be your podcast. I love ulting also. Don't worry about it. Please do. I control myself a lot. Part 2. Wait for part 2. Alright, thanks man, thanks. अगर आपको कुछ इसमें से नया सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए